Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that in our yesterday's session we were doing exercise 12.5 and we have done up to question number 12. Okay, so the question number 11 and 12 was a statement sum. And there's one more question, that is question number 13, and that is also a statement sum. Okay, so today we are going to start with that last sum of our exercise 12.5, that is a statement sum. Okay, so I'll just write on the topic, that is exercise 12.5. Starting with sum number 13. Okay, so let's begin with it. Rishabh runs 1 kilometer 250 meter every day. How much distance will he cover in the month of September? Okay, so there's a boy whose name is Rishabh and he runs 1 kilometer 250 meter every day. तो जो बॉय जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डेली भागता है. ओके, रनिंग करते हैं जैसे मॉर्निंग में या मस्ट बी इन द इवनिंग. तो वो डेली 1 किलोमीटर एंड 250 मीटर है जो रनिंग करता है. ओके, एंड हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. तो वो कह रहे हैं कि अगर वो डेली 1 किलोमीटर 250 मीटर रनिंग करता है तो दैट उसने पूरे सेप्टेम्बर मंथ में टोटल कितना डिस्टेंस है जो कवर किया है. ओके, सो इन दिस first of all that we have to tell that how many days are in the September. So there are 30 days in the September. Okay, September में कितने days होते हैं? 30. Okay, so distance he covered or the distance he ran in one day is given, that is 1 kilometers and 250 meter, and we have to find the distance he covered in the month of September, that is equal to 30 days. Okay, so the number of the distance he covered in 30 days that we have to find. Okay, so let's write down the statement. Okay, so देखिए हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो हमारी ऑलरेडी दी गई है वो हम लिखेंगे. डिस्टेंस कवर इन 1 day. Okay, number of days in September. Okay, first of all we will write number of days in September, distance cover in 1 day and distance cover in 30 days. Okay, that we have to find out. So लिखिए point of writing total days, we will write down days in September. Days in September is equal to 30 days. Okay, distance covered in, not covered, distance run is running now. Distance run in 1 day. Distance run in 1 day. एक दिन वो कितना डिस्टेंस रन करता है, दैट इज 1 किलोमीटर 250 meter. So that is the distance that he run in 1 day. Distance run in 30 days. September में उसने टोटल कितना डिस्टेंस रन किया, that we have to find out ना, and that we can calculate only if we know we will knowing that how many days are there in September. So there are 30 days in September. So distance run in 30 days, वो हम कैसे निकालेंगे? 1 किलोमीटर 250 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30. उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन हमें क्या करना है? वी विल डू द कन्वर्जन.
So now we are going to convert this 1 kilometer and 250 meter in meters. So चाहे तो आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो और चाहे तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में. But I prefer to convert bigger unit into the smaller one. So that means I am just going to convert kilometers into meters. Okay. So let's convert it. 1 kilometer 250 meter. So 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay. 1 kilometer को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे, so we will multiply it with 1000. 1 multiplied by 1000 and it will be converted into meter plus 250 meter. Okay, so that will be 1000 meter plus 250 meter. Now after adding them both, 1000 plus 250, and this calculation you are going to do in the rough. 1000 plus 250 will be 0, 5, 2, 1. That is 1250. That will be 1250 meter. 1250 meters. Okay. ये हमने कन्वर्जन के बाद दैट वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर. आफ्टर कन्वर्जन वी विल गेट 1250 मीटर. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 1250 मीटर विथ 30. ओके, सो 1250 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 30. तो देखिए 30 है तो आप इसको चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो देखिए ऑलरेडी 1030 में 10 है. ओके, यू कैन यूज दैट ओल्ड मेथड. पहले 3 से फिर 0 से मल्टीप्लाई किया एंड देन ऐड देम. ओके, एंड अनदर मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट द सिंपल 0 30 की एक 0 यहाँ पे लगा दीजिए एंड आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दिस 3 विद ऑल द नंबर्स गिवन अबव. सो 0 विल बी रिटन हियर. जो 30 वाला 0 है इसको हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू, ये सिर्फ हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ 0. सो इफ देयर इज 0 इज गिवन इन द डिवाइजर, सॉरी मल्टीप्लायर जो है हमारे उसके साथ 0 दिया है, तो आप इसको सिंपल 0 उसको वहीं लिख दीजिए एंड जो बाकी डिजिट है उससे बाकी इसको मल्टीप्लाई करिए. सो तब 0 जो 30 की 0 थी दैट आई हैव रिटन हियर ओनली. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद ऑल दीज नंबर्स. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 will be carried here. 3 2s are 6 plus 1. That is 7. 3 1s are 3. So the answer is 37,500 meter. So he has covered near about 30. Sorry, so he has not near about. So he has covered 37,500 meter in month of September or in 30 days. तो उसने सितंबर मंथ में कितना डिस्टेंस कवर किया बाय रनिंग? दैट इज 37,500 meter. Okay, so at last we are going to write the solution sentence. Therefore, he runs 37,500 meter. और देखिए मीटर को अब किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन यू विल मल्टीप्लाई डिवाइडेड विद 1000. और देखिए किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 में कितनी जीरो से 3. सो इन द किलोमीटर, सो द मीटर इज गिवन अलोंग विद द किलोमीटर. सो देयर आर 3 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड इन द किलोमीटर. जब भी आपने एडिशन की थी तो आपको बताया था मैंने कि किलोमीटर में हमेशा, सॉरी मीटर में हमेशा 3 डिजिट्स होते हैं. सो हियर what we are going to do is we are going to take last 3 digits from here and that we will consider as meter, and the rest of the digits in the front that we will consider as kilometer. Okay, so therefore he runs 37,500 meter or 37 kilometer 500 meter. Okay, so this is the answer. Therefore he runs
37,500 meter or 37 kilometer 500 meter. Okay, so this is the total distance that he had run in the month of September. So this is the total distance that he has run in the month of September. Okay, so this is the solution of question number 13 of exercise 12.5. Okay, so देखिए question था distance run in 1 day was given and we have to calculate the distance run in month of September. And as we know that in the month of September we are having 30 days. Okay, so that's what I have written in the first line. Days in September is equal to 30 days. Now the distance run in 1 day was given. Distance run in 1 day, that is 1 kilometer and 250 meters. Sorry, 1 kilometer and 250 meters. Next, now distance run in 30 days that we have to calculate. 30 days क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने पूछा कि सितंबर में उसने कितना डिस्टेंस रन किया तो इन द सितंबर वी आर हैविंग 30 डेज, तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30. सो नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस दैट ही हैड रन इन 30 डेज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई डिस्टेंस रन इन 1 डे विद 30. That is 1 kilometer 250 meter multiplied by 30. But according to our topic, so before multiplying or before doing the division, first of all we have to do the conversion. So that means we have to convert the given measurements in a same unit. तो दोनों को same unit में लेके आएंगे. ये किलोमीटर को मीटर में लेके आइए या मीटर को किलोमीटर में लेके आइए. That is only totally up to you. So whatever you want to do, you can use that. Okay, but I have here just converted kilometer into the meter because that is easy. Okay, so 1 kilometer is equal to 250. So 1 kilometer 250 meter that we have to convert. So 1 kilometer is equal to 1000 meters, and after doing the conversion we got 1250 meter. So this is the total. So this is the measurement that we have got after conversion. That is 12,500 meter. ओके अभी ये 1 किलोमीटर 250 मीटर जो है उसी का कन्वर्जन प्रॉपर्टी इज 12,500 मीटर. नाउ द मेन क्वेश्चन इज हमें फाइंड आउट क्या करना था कि 30 डेज में उसने कितना डिस्टेंस रन किया. सो दिस 12,250 मीटर दैट इज द डिस्टेंस दैट ही हैज कवर्ड इन 1 डे. ओके, तो 12,250 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट ही हैज कवर्ड इन 30 डेज. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 30 वी गॉट to 37,500 meter. Okay, so this is the answer. Therefore he runs 37,500 meter. और देखिए in the meters we must be having 3 digits. तो हमने क्या किया? You can do the division with the 1000 as well. That is only up to you. तो हमने क्या किया, जो लास्ट 3 डिजिट्स थे क्योंकि मीटर में 3 डिजिट्स होते हैं उसको हमने कंसीडर किया एज मीटर, और ये आप कर सकते हैं बेटा किसी भी सम में. एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स दे वर कंसीडर एज किलोमीटर or 37 kilometers and 500 meter. So this is the final answer of question number 13, and you can just pause the video here and write down the solution of it. Okay, so with this we have completed our exercise 12.5, and now we are going to start with the next topic, that is division of length measures by conversion. So देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ बेटा डिवीजन ऑफ लेंथ मेजर्स बाय कन्वर्जन विद इन ब्रैकेट. सो दैट मीन्स आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों कन्वर्जन करके ही करनी है. ओके, सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू डू द डिवीजन एंड द मल्टीप्लीकेशन आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन ओनली. ओके, सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 12.6. Okay, so I'll just change the topic here and as well as raise the sum. Now we are going to do the conversion. Okay, so we are going to do the division with by conversion. Okay, so the exercise, next exercise is 12.6. Okay, now starting with the first sum, divide and find the quotient. Divide and find the quotient. तो हमें पहले divide करना है and then we have to find the quotient as well. Okay, so let's do it. The first sum is 804 meter 84 centimeter. 804 meter and chalk is not working.
804 meter and 84 centimeter by 4. So now we have to divide 804 meter and 84 centimeter with 4. अब हमें 804 मीटर और 884 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करना है? We have to divide it with 4. But keep in your mind that first of all you have to do the conversion. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे into the same unit. तो मीटर एंड सेंटीमीटर is given, so you can convert meter into centimeter or centimeter into meter as well. So I'm just going to convert meter into centimeter. Okay, so 804 meter plus 84 centimeter. Okay, 1 meter is equal to 100 centimeter. ये आपको सबको पता है that 1 meter is equal to 100 centimeter. Then 804 को हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर में. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 804 विद 100. मल्टीप्लाइड विद 100 एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर. ये है 84 इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज इट इज. 84 ऑलरेडी हमारा सेंटीमीटर में है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे. ओके, नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन. 804 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी 804 and 2 zeros at the back. Okay, because in 100 we are having 2 zeros. It will be centimeter plus 84 is already in centimeter. Next we have to add them both. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे in the graph. So है 80,400 plus 84. 80,400 plus 84. 0 plus 4 is 4, 0 plus 8, 8, 4, 0 and 8. That is 80,484 is equal to 80,484 centimeter. Don't forget to write the unit. That is 80,484 सेंटीमीटर. ये क्या है? सेंटीमीटर. ओके, सो इट इज सेंटीमीटर. सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड, वी हैव डू द कन्वर्जन. हमने किलोमीटर और मिलीमीटर सेंटीमीटर सॉरी मीटर और सेंटीमीटर जो हमारे पास दिए थे उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया. ओके, बाय मल्टीप्लाइंग द मीटर विद 100 we got it into centimeter and now we after doing the addition we got 80,484 centimeter. Now the main thing that we have to do is that we have to divide and find the quotient. This is the main topic. Okay, तो main हमें conversion के बाद करना है. So now we are going to divide this converted digit, that is 80,484 with 4. अब हम 80,484 है उसको हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड. ओके, let's do it. 4 2s are 8 minus 8 is 0. We will bring down 0. 0 से 8 4 को डिवाइड कर सकते हो? सॉरी 4 को 0 से डिवाइड 0 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नो. तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट पे नीचे ले जाएंगे, दैट इज 4. सो नाउ हम 2 डिजिट नीचे इकट्ठे लेके आए हैं, सो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू पुट अ 0 इन द क्वोशिएंट. जब हम 2 डिजिट नीचे इकट्ठे उतारते हैं हम ऊपर क्वेश्चन में क्या लगाते हैं? 0. ओके, सो जो हमने यहाँ पे लगाई है. सो 4 1s are 4. 4 minus 4 is 0. Now we will bring down 8. 4 2s are 8. 8 minus 8 is 0. Now we will bring down the last digit, that is 4. Okay, 4 1s are 4. Nothing will be left. So the answer is 20,121 20,121
meter. Answer, quotient is equal to 20,121 meter और सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 2. तो लास्ट 2 डिजिट्स को हम सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर बनाएंगे और बाकी सबको मीटर. सो और 201 meter 21 centimeter. Okay, I'll just write it again. Just give me a second. The writing is not clear. Okay, so you will write quotient. हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन इज इक्वल टू 20,121 सेंटीमीटर और 201 meter and 21 centimeter. Okay, so this is the answer. So now देखिए हमने इसमें क्या किया, हमने सिंपल इसमें डिवीजन की है आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन. कन्वर्जन अभी जो आप पीछे करते हैं वही है सेम. 804 मीटर 84 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कन्वर्टेड इट. ओके, सो आफ्टर डूइंग द कन्वर्जन वी गॉट 80,484 जो कि आप अभी तक करते आए हो. And after that you have to find the quotient, and quotient can be find out only by division. So that's why we have done the division here. And after doing the simple division is it. So after doing the division we got 20,121. So that is the quotient. और देखो आपने जो 20,121 जो निकाला है वो आपने कन्वर्जन के बाद निकाला. So that means जो कन्वर्जन है that is in centimeter. Now we are going to reconvert it into the meter and the centimeter by separating the last 2 digits that are considered as centimeter and rest of as meter. So the answer is quotient is equal to 20,121 centimeter or 201 meter and 21 centimeter. Okay, so this is the solution of question number 1 of exercise 12.6. So in class you can just pause the video and write down the solution of this question number 1 of exercise 12.6. Okay, let's do one more sum of this type so that if you'll be having any kind of doubt, so that will be clear. Okay, so let's do one more sum. So I'll take some other sum from the book. Let's take question number 6. Okay, I'll take question number 6. Okay, now we are going to do question number 6 from your book. Okay, हम question number 6 करेंगे बुक में से. Okay, that is given. Now again in this also you have to divide and find the quotient. आपको divide करना है, then you have to find the quotient. Okay, so divide 7 kilometers 500 meter by 6. तो हमें 7 kilometers 500 meter को divide करना है 6 से, but after the conversion. Okay, so first of all we are going to convert kilometers into the meters. Okay, and after that we are going to do the division. Okay, conversion के बाद हम क्या करेंगे, उसकी division. So let's do it. So it is 7 kilometer 500 meter by 6. 6 is here na? Yes. So first of all 7 kilometer 500 meter plus यहाँ पे लिख दीजिए 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, so 7 will be multiplied with 1000 to convert it into meter. So 7 multiplied by 1000 it will be meter plus 500 meters plus 500 meter. Now let's do the calculation. 7 multiplied by 1000 will be
7000 meter plus 500 meter. So now we are going to add both these. 7000 plus 500. So that will be 0057. So that is 7500. So that is 7500 meter. 7500 meter that we have got after doing the conversion. Okay, हमारे पास conversion के बाद क्या आ गया? That is 7500 meter. Okay, so now we are going to divide this 7500 meter with 6. Okay, so let's divide it. $7,500 divided by 6. 6 is the divisor and the 7,500 is the dividend. And we have to find the quotient. हमें निकालना क्या है? Quotient. Okay, so let's do the simple division. 6 ones are 6 minus 1 will be here. Now we will bring down 5. It is 15 now. 6 twos are 12 minus 15 minus 12 will be 3 and it will be 0, or you can put the cross as well. So now 3 can be divided, so we will bring down 0. That is 30. 6 के टेबल में 30 आता है? Yes. 6 5s are 30. 0 and 0. Now but in the division हमारे dividend we are having one more digit. dividend में हमारे पास एक और digit है जो कि 0. तो हम इस 0 को कहाँ ले जाएंगे? सीधा अपने quotient पे. अगर हमारे पास dividend में बेटा कोई digit कोई digit, अगर dividend में हमारे पास 0 बचता है आफ्टर द नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है या पूरी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं? उस 0 को कहाँ ले जाते हैं? वी विल टेक इट टू द क्वेश्चन. So the answer is 1250 meter. So the quotient is, quotient क्या आएगा? The quotient is 1250 meter. So ये तो हमारे पास आ गया मीटर में, but in the question it is given in the kilometers and the meters. So इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इन ओके. एंड जो किलोमीटर के साथ मीटर दिया होता है तो उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 3. So there must be 3 digits in the kilometers, sorry, in the meters. So here what we are going to do again, we are going to take the last 3 digits at the meter and the rest of the digits at kilometer. Okay, so or 1 kilometer 250 meter. So this is the final answer of question number 6 of exercise 12.6. Okay, so question दिया था that we have to do the division and find the question. So question was 7 kilometer 500 meter divided by 6. So first of all, as I have already told you so many times, that we have to do all the calculation after doing the conversion only. So here I have converted 7 kilometers and 500 meter into मीटर. सो कन्वर्ट किया किलोमीटर को मैंने मीटर में. सो आई हैव कन्वर्टेड किलोमीटर इनटू द मीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7 with 1000 we got 7000. 500 was already in meters, so I have written it exactly. Now after adding them both we got 7500 meter. Now the main thing that we have to do the division. So we have to divide this 7500 with 6. So after dividing this 7500 with 6, I got 1250. Okay, so that is the quotient, but there is nothing remain in the remainder. Remainder में कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया? That is 1250 meter or 1 kilometers or 250 meter. Okay, so you can just pause the video here for the solution of question number 6 of exercise 12.6. Okay. So now it's homework time. So your homework is that you have to complete our questions of exercise 12.6 up to question number 6. तो 12.6 के up to question number 6 तक आपको जितने भी remaining questions है, देखिए first and the 6th one I have done, तो second, third, fourth and fifth. So these 4 parts you are going to do by yourself only. Okay, you just try and you will be easily able to solve it.
Okay, so with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.